evening, ma'am. Good evening. So, in the last session, we started with the analyzing the database which we created for a human resource management system. So, till the date, anyone having any kind of doubt or any kind of problem, any facing any problem of executing the query? No, ma'am. Fine, perfectly fine. So today we will be moving ahead into the database SQL side. And in the last class, we started extracting the data and finding the result set out of the database which we created. And for creation of the database for the case study, I had already shared two files with you. That is for the DDL for the database creation file, and then DML basically file where the insertion of data records is already there. You have to just copy paste it and execute it. So I hope everybody is ready with that database or I mean to say the case study, right? Yes, ma'am. Now we had already demonstrated few clauses in the last session. That is the order by clause we demonstrated, then where clause we demonstrated. So have you practiced those clauses? Yes, ma'am. Good. Any doubt about those any doubt regarding those clauses? No, ma'am. Fine. So I would like to give you a few things here. Suppose I want the employee uh, employee from my employee table, okay, by first name, alphabetical order. So can you just give me what query I would write? Can you just immediately write it into the chat box so I can understand what level you are understanding, so I can get into more detail side. मुझे मैंने क्वेश्चन दिया है अभी आपको आज. आई वांट कि आई वांट यूजर्स एम्प्लॉयज आइडियली एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास. तो मुझे एम्प्लॉय टेबल चाहिए है, उनका फर्स्ट नेम चाहिए है और वो फर्स्ट नेम मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए है. तो क्या मैं क्वेरी लिखूंगी? व्हाट क्वेरी आई विल राइट? तो चैट बॉक्स में क्विकली लिखो, क्या क्वेरी आएगी? आई वांट अ क्वेरी. Okay. Anyone else? Only Rahul had replied to my answer. No one else had replied. So मैं क्या समझूं? आ रहा है, नहीं आ रहा है, or what exactly you are doing with the query side? बहुत ही छोटा सा query दिया हुआ है. Ma'am, are you able to see my chat? No, I am not Uh, able to see. Kindly select जो वहां पे ऊपर two option है ना, वहां पे आप मेरा नाम select करोगे तो मुझे आएगा, या आप okay, all को भेजोगे तो भी मुझे दिखेगा. okay, ma'am. Naitika, yeah, okay. हमने डिस्टिंक्ट भी डेमोन्स्ट्रेट किया था लास्ट टाइम, राइट? ये सारी क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लॉजेस से हमको यूनिफाइड वैल्यू मिलता है. मतलब बेसिकली हम डेटा क्लीनिंग जब प्रोसेस जो बोलते हैं ना डेटा एनालिटिक्स में, सो डेटा क्लीनिंग प्रोसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट आई से द क्लॉजेस. डिस्टिंक्ट क्लॉज हो गया, ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया, राइट? सो इन सारे क्लॉजेस से वी एक्चुअली अप्लाइंग द डेटा क्लीनिंग प्रोसेस और डेटा क्लीनिंग इन आवर डेटाबेस. ओके. Now, there is another, yeah, I just want कि मुझे पहले 5 employees का ही data चाहिए. How I am going to write that query?
I want a query, I want a record set from my say data set. अब हमारा data set अभी तो बहुत ही छोटा है ideally, but when you actually going forward for actual real world data sets, okay, आप Kaggle से अगर आप download भी करोगे data sets, तो आप देखोगे वहां पे हजारों से lines रहते हैं, data के records रहते हैं. तो हमको अगर at a time कुछ 100 data sets ही चाहिए है, पहले के 100 चाहिए है, या पहले के एम्प्लॉइज जिनका सैलरी सबसे ज्यादा है वो डेटा सेट चाहिए है, या सबसे पहले जो हायर्ड हुए हैं उनका डेटा सेट चाहिए है. सो फर्स्ट 100 आई वांट, फर्स्ट 50 आई वांट. हाउ आई एम गोइंग टू राइट द query for it? Okay, so I will be using, yeah, I will be using limit 5, right? I will be using limit 5 here, right? So who had given the answer? Naitik had given the answer limit 5. So limit is basically the keyword, or we can also call it a clause. Okay, so I'm now sharing my screen again. One second now. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Just give me 1 second. I'm just starting with the SQL Server Studio. And I'll be trying to give you example of limit basically. Okay, so maybe Natik is from the CS background, so he is quickly answer my question, but many of you are not, so I am just Ma'am, how. Yeah. I am not CS background. I am a management student. Okay, you are not from CS background. I thought you were in the 11th, 12th, you might be having CS. No, ma'am, I don't have CS, ma'am, in my 11th, 12th. Okay, but still you give me the right answer. That's really great. So which is our data set? I think HRDPT in which we are working, right? If I'm not wrong. ये 5 table है क्या इसमें? 7? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, we do have this 7 tables. I just need to check whether the data is there or not. So yeah, we do have a data here. And now we are in the HRDPT. I started writing the query here. I'm so sorry. Today I'm having tremendous throat infection. So if my voice is a little bit annoying you, just kindly cooperate. ID I'll be selecting, okay, and the first name I'll be selecting, okay. So it's not compulsory कि आपको first name या last name जो भी है वो आप ले सकते हो, okay. It's all up to you. And I am just taking a last name as well from employee, okay, and from employees table. Then I'm just writing a order by, okay, order by clause I'm using. Order by what I want it should be into the first name order, matlab alphabetical order, and with the limit, I'm just using a limit here and 5, okay. अब ये जो limit clause है ना, मतलब it's sometime it works with the SQL server, sometime it is not, depending upon the version you are using. But conceptually, if I'm just talking you, explaining you, limit is the basically one, what I say, the limit is the keyword which we are using to get the value. Look at this, incorrect syntax near limit. So this limit is not compatible with the SQL server, okay. Now suppose I want it should be work into the SQL server, then I also have offset. I think offset is also not a part of the SQL server. 1 second. Off. Offset is also not supporting with this version. Kindly check with your version whether this limit or offset is working or not working.
Kindly check limit is working at your end, because in my version limit keyword is not compatible. So can you just check at your side? You can also use top. Yeah, top is working here. So top 5 employee ID, and this is compatible with my version here. So I'm just getting a top five basically employee records here. So again, it depends, it depends, like sometimes the syntaxes or a keywords, they are used for the same purpose, but they are not compatible with the certain environment. जैसे अभी SQL Server में मेरा limit और offset work नहीं कर रहा था, पर मैंने top 5 use किया तो वो work कर गया. तो हो सकता है कि आपके वर्जन में limit work करे, or maybe in your MySQL environment, limit will definitely work. Yeah. So you try to understand कि keywords भले ही अलग-अलग है, but the उनका जो main purpose है that remains same here. Okay. मैम. Yeah. मैम हमारे में भी लिमिट वर्क नहीं कर रहा. So you can try with the top 5. Okay, मैम. तो बेसिकली टॉप कीवर्ड, अगर मैं अभी मेरे एनवायरनमेंट की बात करती हूँ तो टॉप कीवर्ड या लिमिट, ओके, ये जो क्लॉजेस है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट रिजल्ट सेट. मतलब अगर मुझे सिर्फ पहले के 100 एम्प्लॉइज चाहिए है आउट ऑफ से 10,000 employees or 5,000 employees. So I will be directly writing this query and I am getting my result set. And on that result set, I start analyzing my data. Okay. So this clauses plays very important role in the data analytics. Understood? Yes, ma'am. Now we also have a fetch basically query, a fetch keyword. Okay, so fetch clause is to limit the number of rows it is being written by the query. So sometimes fetch is also work with the limit. Okay, limit and fetch दोनों hand to hand work करता है. And fetch is basically used by MySQL and Postgres. Okay, these two databases supports fetch keyword, okay, fetch clause. But yes, I'm giving you this extra input apart from SQL because see, we never know like in which environment you are supposed to do this data analytics using database. So maybe it will be a MySQL or maybe it is a Postgres. So you should know like what syntaxes or what keywords we supposed to use here. Okay. Now, we also discussed with the where clause. So I'm just opening our notes file quickly, and I will be just briefing about the clauses here. Okay, so so where clause we already discussed, order by done, distinct done. Okay, then I had given few things here. I hope you had completed those assignments. Those who had not completed, please kindly practice those because that is for you only. So we started with the basically limit and offset. Okay, these are the clauses we use. We also demonstrated with the top clause. Okay, this is basically these clauses are basically for exact number of rows as a result set. Okay. Then we also discussed with the where clause, right? So where clause is followed with the
condition. And where clause followed with the condition can be true, false, condition can be greater than or with the followed with the operators. Okay, so we had seen that in the condition either you can use the operators, in the condition you can either use the basically true and false kind of situation. Okay, now when it is a numeric one, you can easily apply the operators like a greater than, less than, equals to. And when it is basically the character type, or we can say the varchar types, you can pass it with the help of double quotes, right? So if I want a person whose country is say India, or a person whose country is say Canada, so I can just pass country is equals to Canada in single quotes. Can you just write it down, that query? Using where clause, I want a employee, write a query. Okay, so I just want to write a query using where clause. Okay, what I want here, I want a employee whose last name is say, in my data set I am having, 1 second, whose last name is Chan. Okay, I want employee whose name is Chan. How I'm going to write this query? Quickly write it down in the chat box. Quickly. I want it should be the quickly manner. Can you just write it down? Yeah, in the chat there are ample of things coming. Select star from this. Okay, Chan. Select first name from the employee where last name is equals to this. Somebody has written or something. Ma'am, I am not able to attend last 3 classes due to I lost my grant, so I need to complete my last classes to update my. To just say okay, Shweta, and nothing more. So that I can get your approval and leave the meeting. Complete my rest of. Okay. But Shweta, if you just leave this meeting, you also lost this class as well. Okay. So are you going to take care about this class as well? Shweta, I am talking with you only. Sweta Kumari. Yeah. Okay, fine. Okay, then I would say okay. Okay, then please, what I say, whatever the backlog it is there. So please just do your homework or complete the work. Okay. Yeah. So I was where we are. We are just looking for the Chan. So are you getting that, employees? Whose last name is Chan? So yeah, we are going to write this query immediately in our query side. Okay. So what I want here is I am writing a query. Select employee ID, comma, first name, comma, last name from employee. Now, the most important thing here is where clause. So where, okay, last name is equals to Chan. So this is my query and I'm executing it. So I'm getting the person whose last name is Chen. So the employee ID is 110 John Chen. So even it's not the last name. Yeah. Ma'am, I sent the select start from employee where last name is equal to Chan. Ma'am, is it correct or wrong? Yeah, it's a correct, perfectly fine. See, every time I don't want a complete record. मतलब मुझे पूरा table नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका नाम ही चाहिए है. So I will write the
fields which I want. Okay, मतलब मुझे जो टेबल में fields चाहिए है as a result set कि उस टेबल में employee ID, first name और last name चाहिए, तो I will be writing that only. I will be selecting that only. अगर मुझे पूरा का पूरा row चाहिए है, let's say I want a complete row here. Okay, so that is also right. It will work. It will work. Okay, but in that case, I will be getting a complete table here. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so it doesn't matter like what exactly whether you are writing a star or not. Matter is like what exactly result set you want. मतलब आप क्या result set में चाह रहे हो, आपको जो analysis करना है, तो आपको अब देखो यहाँ पे हमने just एक simple query लिया कि उसका last name चाहिए, लेकिन actual query कैसा आएगा पता है आपको? I want my first 50 employees whose country is Canada. So this kind of query I had to fire on my data set with the top 50 and whose country code is or country name is Canada. So there I will be only, I want those employee with that employee detail whose country is Canada. Is this clear to you? Yes, ma'am. And then on that result set, I will do my analysis. कि इनका salary क्या है? Most of the Canada employees are in say sales department. So I want to make some changes in their departments, or I want to just evaluate that the employees in the Canada who are getting more salary or lesser salary. So such kind of analysis and decisions I can take it further. Okay. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, now quickly on the basis of this, just write down, okay, just write down. I want a query, I want the employees, one second. I want a employee, मैं यहाँ पे query लिखते चल रही हूँ क्योंकि ये जब मैं आपको notes दूंगी, तो आपके पास query क्या क्या practice करनी है वो भी रहेगा, okay? So I want a query for, I want a employee, I want to get all employee who joined the company say after January 1st, 1999. Now write the query here फटाफट. Query लिखो, chat box में लिखो और execute भी करके देखो आपका. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना हम कैसे analysis कर रहे हैं अभी? Yes, I'm not understanding. Yes, you're not able to understand. What does it mean? No, ma'am, we are able to understand. Okay, thank you. Just practicing. Okay, see, practice is very important here, okay? Because this is like kind of things which you need to practice then and then only you will be understand and recognize how to apply this, okay? Yes, ma'am. Then, yeah, I got many chats here, so let me check. Yeah, perfectly fine. Okay. So now we can also use a comparison operator. So mainly in your, when you are setting certain criteria here with the where clause, so you are applying the conditional operator, or we can say the comparison operator, like equals to, less than, equals to, like that you had mentioned, right? So this kind of operators also you can use it. Okay. Now, Ma'am, one more question. Ma'am, actually, the date is in the format of, in the year, month, and date. So you write like 1st Jan 1999.
So we have to write that only, or we have to change that format? Is there any way? See, format can be changed easily. We do have a date functions in the SQL. Okay. So using the date functions, you can easily change the date format. Okay, ma'am. So, but right now we have to enter that only which we have given in the employee table. Exactly. So it is easy for us to extract the data. Okay. क्योंकि जो डेट फॉर्मेट दिया है वही डेट फॉर्मेट अगर कंडीशन में डालेंगे तो हमको डेटा सेट इजीली मिलेगा. अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरा डेटा हमको रिजल्ट जो है वो किसी अलग फॉर्मेट में आना चाहिए. सिर्फ हमको ईयर दिखना है या सिर्फ हमको मंथ दिखना है तो हम वहां पे हमारे क्वेरी में डेट फंक्शंस यूज करेंगे. एंड आई एम गोइंग टू यूज दोस डेट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डेट फंक्शंस वेरी सून. Okay. Okay. Let me Okay, first ma'am. let me first cover your clauses. Okay. Okay, ma'am. Thank अब मुझे ऐसा क्वेरी चाहिए है. I want the query. I want I want those employees whose phone number is null or empty. Null or empty. Empty in a database, in a table. It's a very important query. Okay. आप पहले कोशिश करो फिर मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि यहाँ पे हम डेटा क्लीनिंग करने वाले हैं. क्योंकि हम नल वैल्यूज को एंटरटेन नहीं करेंगे. क्योंकि अगर नल वैल्यू है तो एनालिटिक्स क्या करेंगे आप. राइट. एनालिसिस किसका होता है जिसमें वैल्यू है. राइट. कोई डेटा है. अगर कोई फील्ड या कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज डोंट हैव सर्टेन वैल्यूज. ओके. मतलब हमारे टेबल का कुछ कॉलम में वैल्यू है ही नहीं तो हमको उसको रिमूव करना चाहिए. दैट्स अ डेटा क्लीनिंग स्टेप फर्स्ट जो हमारा डेटा एनालिटिक्स का फर्स्ट पार्ट आता है. तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड मिसिंग है. तो आई विल बी राइटिंग दिस क्वेरी. सो प्लीज ट्राई दिस क्वेरी फर्स्ट. Okay. So let's start from the employees where phone number is equals to 0 or null. Right. Who are given static, right? So what it will return? It will return an empty result set because can you just write it down? नैतिक यहाँ पे हमको क्या मिलेगा जस्ट एक बार चेक करो. Okay, ma'am. ये जो क्वेरी आपने लिखा है उस क्वेरी से आपको क्या मिल रहा है चेक करो. मैम उसमें तो 0 एंट्रीज आ रही हैं. मतलब कुछ नहीं आ रहा है आपके. आप यू मीन टू से दिस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why you are getting however it is returning 0 set, right? Result set 0 आ रहा है मतलब empty आ रहा है. right? अगर जैसे मैं ये क्वेरी लिख रही हूँ आप लोगों ने ही लिखी है मुझे चैट बॉक्स में तो मैंने वो ही का वो ही कॉपी कर रही हूँ और यू हैड रिटर्न दिस. राइट. 1 सेकेंड. employees from employees table है ना where क्या है हमारा फोन नंबर इज इक्वल्स टू से null. यही क्वेरी है ना. अब इससे मुझे रिजल्ट सेट क्या मिल रहा है. आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग हियर. आई एम गेटिंग अ एम्प्टी रिजल्ट सेट. कुछ भी नहीं मिला. राइट. दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी रिजल्ट सेट. व्हाट इट इज कॉल्ड. इट इज कॉल्ड अ एम्प्टी रिजल्ट सेट. बट आई वांट टू चेक ना कि मेरे डेटाबेस में या मेरे टेबल में ऐसे कितने एम्प्लॉइज है कि जिनका फोन नंबर मिसिंग है मतलब एंट्री ही नहीं हुआ है फोन नंबर का. आई वांट टू चेक इट. राइट. क्योंकि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है डेटा एनालिटिक्स का. सी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस. दैट डेटा हैज टू बी फर्स्ट क्लीन्ड.
राइट? आप एक रैंडम डेटा सेट पे काम नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू नीड टू बी वेरीफाई कि ये डेटा सेट जो है वो मेरा क्लीन डेटा सेट है या नहीं. ओके, सो द डेटा क्लीनिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस आई एम अप्लाइंग. ओके, सो आई वांट टू चेक ओके कि फोन नंबर मिसिंग है या मे बी किसी का हायर डेट मिसिंग तो नहीं है या किसी का ईमेल एड्रेस मिसिंग है क्या. आई वांट टू चेक एनीथिंग. ओके, आई जस्ट टेकन एन एग्जांपल ऑफ फोन नंबर. ओके, सो यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं मिल रहा है. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट आई एम गेटिंग अ empty result set. It does not means कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसका फोन नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है. To compare null values we need to use is null operator. Okay, so I'll just write it down here. To compare null values, okay, what you have to use is we have to use is null instead of null operator. So let's work with the is null operator. So I'll be using select star from employees where phone number is null. Can you just execute this query again for me and see how I am getting the record set, result set where the phone number is missing? Are you able to see here? अगर किसी को नहीं दिख रहा है, by chance they had attended through mobile, so I just want for them only, I'm just pasting here and increasing the size. I hope everyone is now visible. This record. Yes, ma'am. that We I have am. got 6 entries. Yes, sir. Yes, We ma'am, work. Yeah. So is null is the operator I will be using. It's a very important thing I'm discussing. Okay. Is null is the operator I'm going to use with the where clause to check which record or which table is consisting of null value. So मैं उन null values को either I will update it by just collecting the appropriate data or else we can delete it for the further step of analysis. अब यहाँ पे देखो क्या है कि हमने एक डमी डेटा सेट लिया हुआ है, तो हार्डली 6-7 ही लोग हैं, तो कोई मायने नहीं रखता है किसी रिजल्ट के इन्फ्लुएंस को लेके. लेकिन अगर आप वही इमेजिन करो, इफ आई एम हैविंग से 100 of records with the null values, okay, so they really impact on my analysis, right? क्योंकि उनका contribution 0 रहेगा. Are you understanding this? और वो 0 contribution या वो जो null values है, उनका impact मेरे analysis पे आना ही आना है. Are you understanding this? Yes, ma'am. See, यहाँ phone number है. Just imagine if your salary column is 0 or a null. Just imagine. Okay, I'm just giving you example. Just by unfortunately while entering the data or unfortunately it get deleted or anything, और आपके डेटाबेस के 100 लोगों की सैलरी का जो बेसिकली रोज है या वैल्यूज है वो नल है, तो ऑब्वियसली अगर मैं उस डेटा सेट को लेकर एनालिसिस करती हूँ कि मेरा हर महीने का सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है डिपार्टमेंट वाइज, तो ऑब्वियसली वो जो नल वैल्यूज है वो उस सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस पे इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? Yes, ma'am. इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ना. मतलब अगर 100 लोग हैं तो एक मोटा भी हम पकड़ ले अंदाज इन सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो 1 से 1.5 लाख रुपए का तो वो जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा आपके एनालिसिस में, राइट? Right, ma'am. Right. And that directly affects in my decision making or that directly affects my data analytics. Okay, so it is very important in the data analytics that the step number 1, that data cleaning, and data cleaning has to be done to find out how many values or how many records in your data or data set consisting of null values.
and those null value for under certain attributes are really matter or not matters. Okay, अब फोन नंबर नहीं है तो कुछ मैटर नहीं कर रहा है, मतलब एज ए फोन नंबर 0 है तो कोई किसी से कोई कंसर्न नहीं है या किसी डिसीजन मेकिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है. बट वेर अगर वही वैल्यू सैलरी के अंडर नल आ जाती है तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट टू माय decisions, that definitely it will impact to my data analytics process. Clear? Okay, Yes, ma'am. ma'am. So that if we entered a salary in case of a null constant, so it cannot it will give no entries as similar that is given in phone number. Yeah, if you want to check कि कहीं salary null है क्या, you can just write it down the same query. Instead of phone number, you can have a salary over there. Okay, so we have to write is null constant there. मतलब is Then only we have got that entries. हाँ, Okay, ma'am. okay. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, I have inserted this query, the select star from employees where phone number underscore number is null, but I'm not getting that result in my SQL bench. Can you just share your screen? What Yes, ma'am. exactly? Yes, So I ma'am. can help you out. 1 second. सिलेक्ट और स्टार के बीच में स्पेस करो. Okay. What is the problem you are getting here? I don't know, ma'am. This is my last table. Do you have values in it? Can you just show me the table first? 1 second. ma'am. नहीं, आप मुझे सिलेक्ट स्टार इससे ही करके बता दो टेबल वर्क कर रहा है क्या. No, this is the table you created, Yes, ma'am. right? I don't want this. I want your data in that table. Where is the table? Select star from employees. ये क्वेरी लिखो वहां पे. वो वर्क करी कि नहीं पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एनवायरनमेंट सेटअप का इशू हो सकता है. बिकॉज इट्स लुक लाइक नो डेटाबेस सिलेक्टेड हियर. तो आपने डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया है इसलिए वो आपको एरर आ रहा है. फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द डेटाबेस. Okay, ma'am. 1 second. You have not selected the database actually. Yes, ma'am. So kindly select the database first and then start writing the data query. Use third line number 3. Line number 3. नहीं. Line number 3 already created ही है ना. तो ये पहला वाला लाइन use 3. ना. सिर्फ लाइन नंबर 3 सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो. दैट्स इट. ये एग्जीक्यूट करो. हाँ, अब नीचे आओ अभी क्वेरी में select star from the employees.
अभी आप लिख रहे थे ना जहाँ पे, और Yes, नीचे, और नीचे, हाँ क्वेरी 1, हाँ यहाँ पे लिखे ना, यहाँ से सिलेक्ट करो। it's already select a star from employees where phone number is null. हाँ एग्जीक्यूट करो अभी। Execute. Okay. Yes, now good. You have to first select the database. Okay, okay, Okay. okay. Thank you. Yeah. Okay. So I was now again sharing my what I was telling that I had taken phone number as a making you comfortable to understand what is the importance of is null. But at the same time, when you are actually dealing with the real world scenario or real world, I mean to say, situation, so this is null is plays a vital role over there. Okay. Now, in the SQL, using where clause, we also have certain logical operators. Okay. So let's talk about SQL logical operators. Now, we'll see one by one. All and any between in like not or and some. Okay, so these are the logical operators. So when I use a and sorry all, how it actually works when I use all? Can you just give me any query with the all, like an all logical operator? Mainly all is going to be used by the subquery. Okay, so I'll be using it all with the subquery very soon. Okay, so जो subquery का concept है वहां पे all का use किया जाता है, all का use किया जाता है. Okay, we will directly start with the and. What is the use of and here? When we have to take two things at a time. Yes, so we Yes. want to construct a multiple condition using where clause, right? Ma'am, I have written, please see whether it is correct or not. 1 second, I'm just checking. Select a star, Uh, all employees, underscore last name, underscore Bob. no, I don't understand why this is 2 underscore you had given here. Okay. Last name Bob, I mean, that will be okay. Last name is equals to in single quotes Bob. Okay, 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 okay. fine. So and is we are discussing about and operators. So and operators will work on the two expressions or two conditions when I want to work with. So let's say I want find all employees whose salary are greater than 5,000 and less than 7,000. For the and, write the query. Write the query. Okay. For all employees, I want employees, or I want find all the employees whose salaries are greater than, say, 5,000 and less than 7,000. क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे ये क्वेरी को कैसे लिखूंगी? Yeah. Am I audible? Yes, ma'am.
So what is the query here? I want a first name of the employee, let's say, and the last name. And say salary, SALARY, salary from employee table, EMP, employees table. Now, where clause, what is the value? Salary का value comparison. हम multiple construct कर रहे हैं ना, condition. It should be greater than 500, sorry, 5,000, and salary should be less than 7,000. Order by, if you want a salary, then you can have a salary column. If you want a first name, last name, you can give that. It's all up to you. Okay? Query सबको समझ में आया है? Yes, ma'am. Try to Yes, ma'am. trying to execute that, ma'am. Yeah. So जब दो conditions है और हमको उसको join करना है, तो we will be using AND operator. Okay? Now talk about any. Any कैसे use होगा? और एंड के बाद हम और करते हैं. इट्स बेटर कि हम और करें पहले. So OR operators, where we use OR operator, again OR operator is also being used for the combine the multiple conditions only. Okay, but in the OR it will returns true if at least one condition, one expression evaluates true. Okay, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं. और का मतलब ये होता है कि आपकी दो कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो आपका और आपको रिजल्ट देगा. अगर उसमें से दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, यू विल नॉट गेट रिजल्ट. सिंपल एग्जांपल, आई वांट दोज एम्प्लॉइज whose salary is either 7,000 or 8,000. Or say I want those employees whose salary is either 8,000 and 5,000 and or 7,000. तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे आउटपुट? सेम क्वेरी से ही मैं बात कर रही हूँ. लुक एट दिस. अभी मुझे कौन से एम्प्लॉइज मिले हैं? जिनकी सैलरी 5 और 7,000 के बीच में है. ओके, इसलिए सब एम्प्लॉइज की सैलरी, इफ यू जस्ट लुक इनटू द रिजल्ट सेट, it's ranging in the 6,000, right? But I now want employees whose salary is either equals to 5,000 or salary equals to 7,000. Okay, so what result set I got it here? Yeah. And suppose if I just write between, okay, so how I'm going to use a between operator here? Between कैसे work करेगा? How the between works? Between operator searches for value that are within a set of values. Okay. Hello. Yeah. Yes. Ma'am, I have a doubt in OR operator.
Ma'am, when the can you open the SSMS? Hmm. Yeah, ma'am. I mean, first row, if you see in the output, there's a salary like 24,000. How it comes? Like यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है ना जो दोनों मैच करे, इसलिए उसने पूरा का पूरा रिजल्ट सेट दे दिया. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. और का क्या लॉजिक है कि एक तो 5,000 वाली सैलरी होनी चाहिए या 7,000 वाली सैलरी होनी चाहिए. ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसलिए पूरा का पूरा रिजल्ट सेट दिया है. अगर यही इफ आई जस्ट डू वन थिंग, ओके, आई जस्ट मेक अ 7,000 और यहाँ से मैं एक द और यहाँ पे देती हूँ मैं 8,000. लेट्स से 8,000 एक सैलरी है, ओके. तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू हियर, क्योंकि यहाँ पे 8,000 वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है. Ma'am, but in case of 5,000, I have got one result. इन केस ऑफ 5,000 5,000 or 7,000. You have just do earlier. डेटा सेट में वो वैल्यू होगा. देखो क्या है कि आप इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करो, ऑपरेटर को लॉजिकली अंडरस्टैंड करो. आपको रिजल्ट सेट में क्या मिल रहा है दैट डजंट मैटर. और से होता क्या है वो अंडरस्टैंड करो. और क्या करता है कि आपका कोई भी एक्सप्रेशन, अभी एक्सप्रेशन कौन से है, एक तो सैलरी इक्वल्स टू 7,000 है और सैलरी इक्वल्स टू 8,000 है. मतलब एक्सप्रेशन 1 क्या है हमारा, सैलरी इज इक्वल्स टू 7,000. और एक्सप्रेशन 2 क्या है हमारा, सैलरी इक्वल्स टू 8,000. यहाँ पे क्लियर है सबको? अब इन दोनों को मैं और से कंपेयर कर रही हूँ इन द डेटा सेट. मतलब क्या है कि जब मैं और ऑपरेटर यूज कर रही हूँ तो मैं ये मल्टीपल कंडीशंस को लेके यूज कर रही हूँ. ओके, दो कंडीशंस है ना, दो एक्सप्रेशंस है. अब जब और ऑपरेटर यूज होता है तो इट विल रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स द ट्रू. मतलब एटलीस्ट एक एक का तो एक किसी तो एम्प्लॉय का सैलरी 8,000 होना ही चाहिए. आप समझ रहे हो? अगर दोनों मैंने पहले दोनों अलग वैल्यूज लिए थे और दोनों मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए वो पूरा का पूरा टेबल दिखा रहा था, नॉर्मल टेबल. बट वेर एज व्हेन आई सेट इट सर्टन एक्सप्रेशंस की किसी का सैलरी 7,000 है और किसी का 8, ऐसे में से कोई भी एक भी वेरीफाई हुआ तो उसका रिजल्ट सेट दो. तो मुझे ऐसे दो एम्प्लॉयज मिल गए जिनकी एक की सैलरी 7,000 है और एक की 8,000 है. क्लियर हुआ आपको अभी? Yes, ma'am. So OR operator returns the true if at least one expression evaluates the true. मतलब एक तो 7,000 वाला ट्रू होना चाहिए या नहीं तो 8,000 वाला. तो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे 7,000 के जगह 5,000 कर दिया तो हमको क्या मिलना चाहिए? what we will get it here? We will get 8,000, क्योंकि 5,000 वाला कोई एम्प्लॉय है ही नहीं जिसका सैलरी 5,000 है. तो वो एक्सप्रेशन तो फॉल्स हो गया. लेकिन सैलरी 8,000 वाला एम्प्लॉय है, इसलिए मुझे वो वैल्यू रिजल्ट सेट में मिला. क्यों मिला? क्योंकि और क्या रिटर्न करता है, इट विल रिटर्न एटलीस्ट वन एक्सप्रेशन शुड बी ट्रू. इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अभी समझ में आया आपको और का यूज कैसे होता है? जिससे लॉजिकल ऑपरेटर. ओके, मतलब दोनों में से एक की सिचुएशन भी ट्रू रहेगी तो वो रिजल्ट देगा. अगर दोनों सिचुएशन फॉल्स है, मतलब गलत ही है, मतलब वैल्यू हमने इवैल्यूएट डालते टाइम एक्सप्रेशन ही गलत डाले, तो पूरा रिजल्ट सेट दे देगा कि भाई ये है सैलरी, आप देखो क्या करना. गॉट इट? Yes, ma'am. अब हम बात कर रहे थे बिटवीन की. ओके, so what is the use of between here? Between operator searches for the value that are within a set of values given. Okay, अब given in what? Given the between मतलब एक तो मिनिमम रेंज रहेगा और एक मैक्सिमम रेंज रहेगा. ओके, so we are having minimum value and maximum value here. Okay.
मतलब एक स्केल रहेगा, मतलब अब जैसे मैं बोलती हूँ कि इफ यू जस्ट वांट टू इवेल्युएट योरसेल्फ ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, मतलब मैं 1 to 5 में अगर मैं 4 बता रही हूँ तो मैं 4 क्या कर रही हूँ, इन बिटवीन 1 to 5 बता रही हूँ, राइट। सिमिलरली अगर आपको कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है जो एक मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज के अंदर आएगी, तो उस टाइम पे आपको बिटवीन यूज करना है। ओके, आप समझ रहे हो चीजों को। एंड जो Yes, मैक्सिमम ma'am. और मिनिमम वैल्यू है, मतलब यहाँ नोट करने जैसी चीज है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी आप ले रहे हो वो इसके अंदर इंक्लूड रहेगी, मतलब 1 और 5 ये दोनों इंक्लूड है। मतलब मैंने अगर आपको पूछा कि स्केल योरसेल्फ ऑन द स्किल सेट ऑफ सीक्वल ऑन 1 to 5, तो आप 1 भी बता सकते हो और 5 भी बता सकते हो, ये दोनों इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि 2 3 4 ही बताओगे आप, ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो कवर्स 1, इट ऑल्सो कवर्स 5। Is it clear to you? So here the minimum value, minimum जो भी आपने स्केल दिया है या मिनिमम जो भी वैल्यू आप सेट करोगे आपके सेट के लिए, कंडीशन के लिए, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू सेट करोगे आपके कंडीशन सेट के लिए, वो यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। ओके, एज अ पार्ट ऑफ योर कंडीशन। अब मुझे ऐसी सैलरी चाहिए, ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए, आई वॉन्ट दोज एम्प्लॉयज whose whose salary are between 9,000 and 12,000। चलो करो ये फटाफट क्वेरी। डू फास्ट। What, ma'am? Hello. Yeah, Uh, what's the value, ma'am? Can you show me the question? 9,000 to 12,000। Yes, ma'am, done. It's working out. So I'm just writing query here Yes, using, ma'am. so first name, comma last name, comma salary from employees table, where salary between 9,000 and 12,000. Order by salary. This will be my query. Okay. And I'll be executing this query. So I'll be getting those employees. No, I'm not getting those employees. In between नहीं work किया यहाँ पे. Between 9,000 Ma'am, और between only, yes. Ma'am, हाँ, order by default ascending order. हाँ वो उसका डिफॉल्ट ही रहता है, असेंडिंग ही रहता है वो। Okay. मतलब आपने नहीं दिया तो भी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही शो करेगा। इट विल शो यू असेंडिंग ऑर्डर। So now I'm getting those values in is between 9,000 to 12,000। मतलब कम सैलरी वाले लोग भी नहीं दिख रहे हैं और 12,000 के अबव सैलरी वाले लोग भी हमको नहीं दिख रहे। So what is the input here? In between the maximum and minimum value which we set, हमको वो ही values दिख रहे हैं। Understood? Yes, ma'am. Fine. So this is basically the logical operator. So we had discussed today clauses. Okay, almost all the clauses we covered. Okay, some having clause and
yeah, having clause is remaining from basically side. Having clause is only the thing we need to practice, and group by. So there are two clauses which we are going to do it parallelly when we start with the joins. So in the next session, I'll going to start with the joins, okay? Because in the joins, we will be using all these clauses. Using all these clauses, we will be applying the joins as well. ओके अब यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताए हैं, कुछ आई हैड नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड, so you had to explore a little bit about those, and please ask me questions if you find any difficulty over there. Okay, remaining queries, those who had मैम practiced, yeah. मैम इसमें जो हम लोग टेबल बनाते हैं लाइक मैम, तो उसमें डायरेक्ट हम लोग एक क्वेरी रन करके फिर टेबल मतलब क्रिएट हो जाता है। लाइक मैम कोई भी फाइल है जो डायरेक्ट इंपोर्ट कैसे होता है मैम एसएसएमएस में? कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे कि ये बाइक स्टोर मैंने क्रिएट किया है। ओके, अब यहाँ पे एक्सटर्नल रिसोर्सेज दिख रहे हैं आपको, एक्सटर्नल डेटा रिसोर्सेज यहाँ पे। यस मैम, हाँ, यस मैम। यहाँ से आप यहाँ पे जाके आप वहाँ पे फाइल्स आपके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन न्यू एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट हियर एंड यू कैन जस्ट क्लिक और देयर एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी डेटा सेट है, ये एक्सटर्नल फॉर्मेट सेट करा हुआ है, लेकिन आपने अगर आपका एक एम्प्टी डेटा सेट बनाया हुआ है तो वहां पे आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन हैव ऑप्शन एक्सेल फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल, ये सारे ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे आपको। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम वन क्वेश्चन, हाँ। मैम जब हमने टेबल क्रिएट किया था तो जो कंट्रीज टेबल था उसमें सेट ऑपरेटर यूज नहीं किया है, ऑन ऑफ, सेट ऑन ऑफ। मैम व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि कंट्रीज में कोई फॉरेन की नहीं होगा। कंट्रीज में था Okay. फॉरेन की, वी नीड टू चेक इट एक्चुअली। अगर फॉरेन की नहीं होगा तो हमको कोई जरूरत नहीं रहती है, वो एक प्रोसीजर है, दैट्स अ कंस्ट्रेंट वी हैड अप्लाइड। तो जब अगर बनाते टाइम कंस्ट्रेंट डाला होगा तो इंसर्ट करते टाइम भी वो रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर बनाते टाइम कंस्ट्रेंट नहीं डाला है तो वी डोंट नीड टू सेट आइडेंटिटी ऑन एंड ऑफ हियर व्हाइल इंसर्टिंग द वैल्यूज। ओके मैम, सो ऑन एंड ऑफ अगर नहीं दिया है तो वी कैन एडिट लेटर ऑन आल्सो। एग्जैक्टली। ओके मैम। Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, please check again. I'm sharing my screen. You are sharing your screen. Yes, ma'am. Ma'am, here there is error in executing from. From is not valid at this. क्योंकि आप दो बार फ्रॉम दे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, Okay, okay, got it. है ना, तो वो नहीं चलेगा। एक ही बार आपको, आप एक ही बार इंस्ट्रक्ट करोगे ना कि इस टेबल में से निकालो वैल्यूज। ओके, तो सिलेक्ट स्टार आप यहाँ पे नहीं दोगे, आप यहाँ जो फ्रॉम यहाँ लिखा है ना आपने, आप एक तो Okay. स्टार भी लिख रहे हो और लास्ट नेम फर्स्ट नेम भी अलग अलग कर रहे हो। एक तो इधर यू कैन हैव इट स्टार, तो आपको यहाँ से स्टार और फ्रॉम दोनों हटा दो, पहला वाला Okay. से, हाँ बस, इट विल वर्क। Again, though cross is showing me, but still. कौन सा, क्या एरर आ रहा है आप? वन सेकेंड, व्हाई 9,000. 9,000 is not valid at this position, expecting EOF. बिकॉज सैलरी इन, आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है, सैलरी के बाद तुरंत आप 9,000 नहीं दोगे, सैलरी के बाद आप बिटवीन दोगे, और बिटवीन ऑफ व्हाट, बिटवीन ऑफ 9,000 एंड Okay. 12,000, ऐसा है। Okay. Yes, ma'am. ये मिनिमम और मैक्सिमम, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे, एंड नाउ Yes, इट विल, now I will get, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Got that. ओके फाइन। Yes. Thank you. Thank you. So, yes. So I was telling that we will now close the session, okay? And I hope you will be having that idea how to extract the values with ample of basically clauses and things which we discussed. So सिर्फ employee table नहीं है, आपके पास बहुत सारे table है, आप उसको mix and match करके you can just find out many things from the tables which you are already having. Okay, from next class we will be starting with the joins and the aggregate functions.
Okay, Okay, Okay. ma'am. fine. Bye, everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Thank you. ma'am.